don't go directly to recognition. I know recognition is easier, but don't go to recognition. Okay, think the question out first. Okay, sit with the question, play with the question, and then see what answer is coming. Okay, bus. Let's start. First question. think, think आराम से. Okay, lot of twos, lot of ones. Okay, I am very happy that so many of you, almost all of you, have given the correct answer. The answer is in fact 2, right? The answer is in fact 0, right? Excellent. This is not an easy question. This is on the difficult side. So it's amazing that so many of you got it right. ठीक है. अब कैसे? Quick explanation. I won't take so much time, but let's see. Z score का formula बताओ. What is Z score? Quickly, quickly. Something minus something upon something. बताओ बताओ. Excellent. X minus mu upon sigma, मतलब SD. Correct? Okay. This is the Z score. What does a Z score represent? A Z score represents how far away a observed value is from the mean. Right? We know this. Okay. What is standard deviation? What is the formula for standard deviation? Something square root summation something something. याद आ रहा है? याद आ रहा है? बताओ बताओ बताओ. Square root of summation of deviance by and variance extra. Correct. बताओ. I is from 0 to n. Correct. We have a n here. Yes. यहाँ पे रहता है x minus mu का square. Plot line of deviance by. Correct. Excellent. Plot line से भी formula you have derived. That's amazing. So she has given us one answer. बाकी लोगों को where are you getting stuck? I'll tell it to you again. No worries. अरे वाह, amazing. ठीक है. अब zero कैसे आया? What we are doing is all values we are, if we subtract them, if we get all of their Z scores, what are we doing? We are measuring their distances, right, from the mean. So if we have 1, 2, 3, 4 and 5 as our data set, okay, ये हमारा data set है, okay, and if we try to take out the Z scores for these, they will lie along this line, correct? some a score will be say -1 यहाँ पे होगा, -2 यहाँ होगा, यहाँ +1 होगा और यहाँ +2 होगा. And when you take out the mean of these values of these Z scores, what will the mean be? ये ऐड करोगे तो 0 ही बचेगा. Okay, so the answer is 0. अब don't worry, I know this sounds a little difficult. After going back tomorrow, आज नहीं, tomorrow, ये data set से calculate करके देखो. Okay, calculate the Z scores, calculate the SD, सब कुछ calculate करो, 0 ही आएगा.
Okay, always. ठीक है? Okay, let's move to the next question. अरे, correlation coefficient बताओ. Quickly, quickly. This is very easy. Excellent, excellent, excellent. Let's go. ठीक है. Plot line का, if you have understood, no, I'll this becomes much easier. If you have not, I'll explain it again. We'll meet again. I'm not going anywhere. ठीक है? Okay. The correct answer is 4, which is minus 0.88. Two things always that you have to remember in correlation. सबसे पहली चीज direction. Okay. And second, magnitude. Okay. Direction and magnitude. Positive and negative. What does positive and negative signify? Direction. Direction of correlation is signified by the valence on the correlation coefficient. Positive है या negative है? Let's the best way to remember this is to come up with creative examples. Best way. ठीक है? मुझे बताओ पॉजिटिव कोरिलेशन का weirdest example that you can think of. And एक negative correlation. I'll give you a small example. It's found that, for example, say uh, wherever Sprite bottles are used, wherever Sprite bottles are used, people wear their shoes on the opposite leg. Sprite and shoes on opposite leg. Okay, shoes on opposite leg का जो rate है वो we have seen that it has increased. Right, now you can come up with any examples. Okay, if one thing is increasing, the second is also increasing, positive correlation. If one thing is increasing, second is decreasing, negative correlation. Okay, and the number itself, which can lie from -1 to +1, denotes the magnitude. So even if this is negative, it's more than the pure value of this. Therefore, this is the strongest correlation. Okay. Yeah, spurious correlation, exactly. कोई आया याद दिमाग में? सोचो सोचो. ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ. Very easy again. Hmm. Okay, okay. A lot of you are saying one. Let's see if it's correct. What assertion, reason, questions? See, I have been teaching how to solve MCQs since around 2 years now. Okay. Now, I'm not saying my way of solving MCQs is correct. It's absolutely not, and you should not use my way. Okay. However, what I have discovered is my way of solving MCQs. ठीक है. तो मुझे मेरा तरीका पता चल गया है. Have you found your way of solving MCQs? Do you know how you solve MCQs? Do you know where you go wrong? Do you know where you get confused and make the wrong choice? Right? So these things are also very important. मैं तो बताऊंगा ही मेरा, don't worry. But these things are also very important. आज नहीं तो कल बता दूंगा. कल नहीं तो एडवांस सीरीज में बता दूंगा. No problem. Getting confused with language is my problem. Of course, struggle with tricky wordings. Exactly. Elimination technique is the most important technique. Oh my god, I'll teach the elimination technique. It's the best technique out there.
ओके, मतलब अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। um yes, language is elimination saved, yes, yes। ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व व्हेन प्लॉटेड नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। ठीक है, कैसा रहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व? ऐसे दिखता है। ऐसे एंड में जाके टच होता होगा क्या? वेयर डज इट टच? मुंबई पुणे हाईवे पर टच होता होगा। वेयर डज इट टच? और डज इट गो सेपरेट वेज? व्हाट हैपेंस? It never touches. There is a word for this also, for this graph. Okay, I'll tell you. The range of normal distribution is from minus infinity to plus infinity. In the light of above statements, choose most appropriate answer. Assertion and a reason. Both are correct. पहली बात तो we have determined both are correct. And because the range is from minus to plus infinity, it can never touch. If the range was from minus 1000 kilometers to plus 1000 kilometers, 1001 किलोमीटर पे टच हुआ रहता, बट इन्फिनिटी पे टच होगा क्या? नहीं होगा इन्फिनिटी पे टच। ठीक है। बिगर इन्फिनिटीज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट मत लाना, बहुत कंफ्यूजिंग है। बट यस, सो बोथ एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ठीक है। द वर्ड फॉर दिस इज asymptotic as Kushi has written correctly। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। बताओ। ये क्वेश्चन नेट में 10 बार तो आया ही होगा, आई थिंक। एटलीस्ट आई थिंक 10 times it must have come। स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस इज रेंज, है ना? नहीं। देन व्हाट इज इट? It is standard deviation। Variance and standard deviation measure the same thing। How are the scores spread? fairly कैसे है scores in the graph? ठीक है। Square root of variance, standard deviation। Okay, next question। यहाँ पे डिविएंस भाई कहाँ पे है बताओ? स्टैंडर्ड डिविएशन गुरु ऊपर। ये है क्या? ये तो समेशन का सिंबल है। ये लोग क्या करते हैं पता है नेट में? आई टेल यू। समेशन का सिंबल दे विल ड्रॉ वेरी स्कैरीली। They will draw like this, like this, like this, like like this। and यहाँ पे कुछ कुछ लिख देंगे कि I is equal to 0, I is equal to 30, या I is equal to n लिख देंगे। एंड आपने तो यही फॉर्मूला लिखा है, यू हैव नॉट सीन एनीथिंग स्क्रिबल्ड हियर, यू विल गेट स्कैर्ड, राइट? डू नॉट गेट स्कैर्ड। ठीक है। दे आर ट्राइंग टू स्केयर यू। ठीक है। दिस डज नॉट मीन एनीथिंग अनलेस यहाँ पे 30 या कुछ लिखा है। अगर n लिखा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट? what does it mean? A while ago I wrote it, yes। I actually did science in my 11th 12th, so integration differentiation was like my bread and butter। but what does this mean? This just means कि the values, the observed values xi है ना ये, the observed values that you will input will go from 0 to n। तो अगर आपको 1 2 3 4 5 दिया है मैंने, तो n कितना हुआ? n 5 हुआ, राइट? तो यू विल पुट ऑल वैल्यूज हियर कि 1 - 3, 1 - 2, 1 - 3, 2 - 3, 3 - 3, करेक्ट? बट अगर यहाँ पे मैंने अपर लिमिट रिस्ट्रिक्ट कर दी टू n - 1, so then what does it mean? That I will not include the last value। I will only include 4 values in my summation। ठीक है। ये सब आपको कहीं नहीं पूछने वाले नेट में। Why am I telling you this? So you do not get scared if you see small numbers। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बताओ बताओ। ए।
ये कैसे होगा? कम ऑन टेल मी। यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन दिख रही है। ओके, इट्स बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि ए कैसे होगा, देन पीपल डाउटेड कि सी, बी, एक कोई तो सही है, दैट वी नो फॉर 100%, राइट? कि ए बी सी डी में से एक तो है ही सही। तो बी क्वेश्चन मार्क, सी क्वेश्चन मार्क, आई नो एक तो रहेगा ही सही, बट कौन सा, वही तो पूछा है ना? अब सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पे एक्सेसिव सिनेप्टिक प्रूनिंग लिखा होता। सबसे पहले सिनेप्टिक प्रूनिंग क्या होता है? सिनेप्टिक प्रूनिंग क्या होता है? आपके दिमाग में ना पैटर्न्स बने हुए हैं, a web of patterns, a web of neurons, and some theories of neuronal development say that an entire web gets activated when you think of something. Okay, I'll give you a small example. Okay, if you have had a best friend or if you've had a partner in your life, you would have a certain connection with them, correct? And whenever they call you will feel a certain way, right? That emotional feeling is encoded in your neurons in a certain web, in a certain pattern of connections. ठीक है? समझ लो ये पैटर्न, दिस इज हाउ यू फील व्हेन योर बेस्ट फ्रेंड कॉल्स यू। ठीक है? अब क्या हुआ? अब क्या होता है जिंदगी में? व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव अ पार्टनर? बताओ। इसका तो ये जो जवाब सब सही देंगे। ड्रामा, ओके। सैड हैपेंस, अरे बाप रे। और क्या होता है? ब्रेकअप होता है। ठीक है? द लास्ट एक्ट ऑफ लव इज लेटिंग गो, किसने लिखा है पता नहीं मुझे, बट ब्रेकअप होता है। इफ यू हैव अ पार्टनर यू विल ब्रेकअप, राइट? सो ये जो पैटर्न है, दिस हैप्पीनेस दैट यू फेल्ट व्हेन दे कॉल्ड यू, this pattern is not used now in 2 years because they've not called you, you've blocked them, no? So how will they call you? So your brain has also blocked this pattern, so it has not been used, and because of disuse, synaptic pruning happens. These connections are removed. Okay, these connections are removed. अब अगर reduced synaptic pruning है, मतलब lot of connections are not removed, reduced synaptic pruning is there, then density of neuronal connections is high. Okay, which causes autism spectrum disorder. Okay, and if excessive synaptic pruning happens, lot of connections are removed, then childhood onset schizophrenia happens. Okay, so our answer for reduced is autism spectrum disorder, and for excessive would be childhood onset schizophrenia. समझ गया सबको? ठीक है। ऐसा मत सोचो कि अगर बहुत ज्यादा ब्रेकअप कर लिया तो स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा, स्पूरियस कोरिलेशन हो जाएगा ये। ओके, कैन यू रिपीट लास्ट पार्ट अबाउट चाइल्डहुड ऑनसेट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया? हाँ, ऑफ कोर्स। रिड्यूस्ड सिनेप्टिक प्रूनिंग मतलब न्यूरॉन्स का डेंसिटी इज हाई, which is found in autism spectrum disorder. Okay, excessive pruning अगर हुआ, lot of neuronal connections are removed, that has been found in childhood onset schizophrenia. Okay, amazing. Next question. Very, very simple. Very, very simple. इसमें भी एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं, बाय द वे, टू रिमूव एटलीस्ट two options. What is the formula for standard error?
बताओ बताओ जल्दी बताओ, गेस तो करो। ABCD में से एक तो सही है। ई गेस मत करना बस, करो गेस करो जल्दी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, गेस करो गेस करो। सिग्मा बाय रूट एन। SE, SE/1। ओके, बाय वन मतलब कुछ नहीं होता है, राइट? नाउ this is inversely related. We can see that SE here is inversely related to the sample size. मतलब सैंपल, जब स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज होगा तब सैंपल साइज इंक्रीज होगा, करेक्ट? बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड हियर, सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वेरी सिंपल। आई होप यू गाइस डिड नॉट लाइक heave a sigh of relief कि रिसर्च खत्म हो गया, because I hope you've gotten friendly with research. You like research now. ठीक है, 5 मिनट में क्लास खत्म हो रहा है वैसे, डोंट वरी। ओके ओके, क्या है आंसर? इकोनॉमिक सक्सेस। एल्फ्रेड एडलर। इकोनॉमिक सक्सेस के बारे में बात किया क्या? नहीं बात किया। एल्फ्रेड एडलर, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपीरियोरिटी, स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियोरिटी। In sociology, I'll tell you a small interesting tidbit. Okay, sociology was one of my majors. Sociology में there's a concept which is similar to striving for superiority. Okay, but what psychology says about it is the opposite of what sociology says. आप समझ रहे हो? So psychology क्या बोल रहा है? That when we strive for superiority, we are striving for personal completeness or wholeness, not social dominance, not economic success, not intellectual achievement. Okay, and you know what sociology says? Sociology says the concept striving for superiority is known as Sanskritization. It has been extensively studied. Okay. And Sanskritization, sociology says that in Sanskritization, you are striving for social dominance, economic success, intellectual achievement, power, privilege, everything. You are not striving for personal completeness or wholeness. सोचो, दोनों पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि नाउ विच डू यू बिलीव एल्फ्रेड एडलर और डू यू बिलीव दीस पीपल? ओके, चलो। सो साइकोलॉजी के हिसाब से बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाई डू दे नॉट अग्री आपस में? कॉन्फ्लिक्ट एंजाइटी, दे हैव डिफरेंट व्यूज। Oh my God, it's very easy. एक ने वाह, Rinzi has given a great point. If they agree, they would be the same field. Excellent point, Rinzi. हाँ हाँ, अभी ये आंसर बताओ पहले। ईगो मेंटेनिंग आइडेंटिटी, जल्दी जल्दी बताओ। ए कम ऑन, डॉट 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 क्यों लिखा है कृतिका ने? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइलिन शीथ? माइलिन शीथ का एक ही फंक्शन है कि सॉल्टिटरी कंडक्शन को फैसिलिटेट करे इन न्यूरोनल एक्शन, इन एक्शन पोटेंशियल्स। Okay, resting membrane potential is maintained by salts and their volumes. सिनेप्टिक वेसिकल्स नीचे से प्रोड्यूस होते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर आप भूल जाओ, यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर कुछ नहीं है। ब्लड ब्रेन बैरियर कब ब्रेक होता है पता है? जब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, शॉक थेरेपी जब देते हैं ना, तब ब्लड ब्रेन बैरियर इज ब्रोकन फॉर अ स्मॉल माइक्रो सेकेंड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, टफ लैंग्वेज यूज कर दिया। वेरी सिंपल, सॉल्टिटरी कंडक्शन बोल दिया तो वी गॉट। ऐसे इसका बहुत सिंपल मैं याद कैसे रखता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले माइलिन शीथ मुझे बताओ, कंडक्टर है या इंसुलेटर है? कंडक्टर है या इंसुलेटर है?
जल्दी जल्दी बताओ। इंसु इज करेक्ट। Myelin sheath is insulator. Okay. Myelin sheath is an insulator. Then how does myelin sheath help solitary conduction? How does it increase the speed of action potentials? How does it increase the speed of the potential traveling through the axon? क्योंकि ये जो है ना, इनको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रणवीर सिंह। ओके, ये है रणवीर सिंह के नोड्स, नोड्स ऑफ रणवीर। ओके, नोड्स ऑफ रणवीर जो है, यहाँ से वो जंप करते हैं बिकॉज दिस इज इंसुलेटर। जंपिंग से स्पीड बढ़ती है rather than traveling the entire length because very long neurons we have actually. Okay, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ। Hmm, ये तो मैंने पढ़ाया था ना, डिड आई टीच दिस? आई थिंक आई टॉट दिस। Oh man, I miss teaching you guys. So much fun. Okay. Proid के sexual stages में Oedipus complex emerges in the phallic stage. Okay. Very simple. आ जाओ वापस. Where have I gone? I'm here only. I'm not gone anywhere. I'll meet you in the advanced series. Next question. Oh man, my mother is texting. It's Mother's Day. Bye guys. मम्मी का बुलावा है. Okay. ठीक है. Overactivity in basal ganglia circuits is most characteristically associated with which disorder? You know, this is a perfect example of where elimination technique can actually tell you the answer. Okay, it can literally tell you the entire answer. Okay, I'll give a small here because I've already over time. Uh, basal ganglia से क्या होता है? What is basal ganglia responsible for? Exactly, movement, right? Movement control. Basal ganglia में अलग अलग nucleus होते हैं that we know of, right? A lot of them are related to movement. Now we can safely assume that if overactivity is there, if activity increases, then movement will also increase. Correct? In which of these three diseases does movement increase? Parkinson's may do we become extremely active? Have you seen the geriatric population with Alzheimer's or Parkinson's play football or something? No. Amyotrophic lateral sclerosis is ALS. ALS में वीकनेस होती है, बहुत वीकनेस होती है, ट्रीट भी नहीं होता है. ओके, यहाँ पे भी ओवर एक्टिविटी नहीं है. एंड ओके, यू डोंट नो एलएस, ठीक है, पता नहीं है, एलएस नहीं पढ़ाया है हमको. बट टूरेट सिंड्रोम यू माइट हैव हर्ड ऑफ, राइट? टिक्स इज अ फंक्शन ऑफ टूरेट सिंड्रोम, इनवॉलेंटरी मोटर बिहेवियर. तो ये हो सकता है ना ओवर एक्टिविटी की वजह से. तो वी गेस दैट बी इज द आंसर. ठीक है, आई हैव नॉट टॉट यू द एंटायर एलिमिनेशन टेक्निक, बट दिस इज हाउ इट गोस. आई टेल यू हाउ टू डू इट in detail later. Okay, Tourette syndrome. Oh, we are done actually. Great. Thank you so much, guys, for joining in. We did 20, 30 questions. I don't know how many we did. 20 though we did, I think. Because you said 20. Thank you so much for joining in. इतने रात को, संडे को, मदर्स डे को, बिल्कुल जोर से अभी क्लास छोड़ो और मदर्स डे पे मदर्स के साथ जाके बैठो. Okay. Thank you. It was great fun teaching you guys. I will see you in the advanced series. Excited to meet you there. I think we are launching tomorrow itself. अरे यार, ये recording कैसे बंद? Stop recording.